This is a lecture number 2 for the chapter application of trigonometry for the class 10th, and in the last lecture we have done up to question number 4 of the exercise 9.1. Now in question number 5, if you read it carefully, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. Suppose this is a kite and the height of this kite from the ground, it is given as 60 meters. The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The string is tied to it and it is tied to the ground, and the inclination of the string with the ground, inclination means angle which the string is making with the ground, is 60 meters. You have to find the length of the string. You have to find the length of the string. So let A is the kite, and AC is the string, and you have to find the length of this string. This is C and this is A. So we know the angle, we know the perpendicular, you have to find hypotenuse. AC is the hypotenuse. So perpendicular hypotenuse ratio is sine. So sine 60 will be equal to perpendicular upon hypotenuse. So sine 60 is root 3 by 2. AB we know as 60 and AC you have to find. So it will be 120 upon root 3 is equal to AC. Cross multiply 120 AC upon root 3. When you rationalize it, multiply and divide numerator by root 3. So it will be root 3 into root 3, 3. So 40 root 3 meter is the height of the length of the string is equal to 40 root 3 meters. If you put the value of root 3 as 1.732, आप निकाल सकते हैं decimal में 732 होता है. It will be in the decimal also. So this is the question number 5, which is a very easy question. Question number 5. Now, in question number 6, what it says that a 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building. So suppose there is a 30 meter tall building, and there is a boy which is 1.5 meter is standing from this 30 meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. He is moving towards the building. Suppose standing here horizontally, and he is 1.5 meter tall and he moves nearer to the building by angle changes from 30 to 60 as he moves towards the building. Suppose this is the angle he is making with the building, which is how much? It is equal to 30 degree. And when he is moving, moves towards here, the angle increases to 60. 30 to 60 angle increase हो जाता है when the boy moves from the point somewhere away from the tall 30 meter tall building. The angle changes from 30 to 60 horizontally. You have to find the distance he walked towards the building. तो ये distance आपको पता करना है कि how much he has moved from this to this point. ये distance आपको पता करना है. And this height is how much? This is 1.5 meter tall. So I am drawing this figure again neatly. So suppose this is the building and first position of the boy is this, second position of the boy is this, and the angle first of all he is making is how much? 30 degree, and then he is making an angle of 60 degree when he moves somewhere. So AB is the building, BC and DE are the two position of the boy, and this height is how much? This is equal to 30 meters. You have to find the distance moved by this boy. So AB is the building, and BC and DE are two positions of the boy. So first of all, if it is given that this is equal to 1.5 meters. Now if you see the figure very carefully, this is AB, DE and BC, and if we let this point as F, now if you see it very carefully,
AF will be equal to AB minus BC. अगर ये ध्यान से देखें, AB में से BC माइनस करेंगे, you will get this AF. तो it will be 30 minus 1.5, it will be equal to 28.5 meters. That is the AF. So if you take the triangle AFC, see the figure very carefully. The angle is given as 30. The perpendicular we know it AF. You can easily find FC. तो perpendicular base में जो angle होता है वो trigonometry का और tangent होता है 10. तो tan 30 will be equal to perpendicular upon base FC. Now similarly in triangle AFE, in this angle is 60, so tan 60 will be equal to perpendicular upon FE, perpendicular upon base. So first of all AFE triangle, AFC triangle, in both the triangles we are using the trigonometric ratio tangent, that is 10. So tan 30 is how much? 1 upon root 3. AF is, we have find it out, 28.5, and FC we don't know. Similarly here in triangle it is root 3 tan 60, AF is 28.5 and FE we don't know. So from this we have find it out that FC is equal to 28.5 root 3 और यहाँ पर FE कितना हो जाएगा? That is 28.5 upon root 3 meters. Means हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पता लगा लिया. वी हैड फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम F to E. तो अगर हमें BD पता करना है कि बिकॉज ये यहाँ से चलकर यहाँ पहुँचा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, मतलब आपको BD निकालना है या हम कह दें EC निकालना है, दैट इज FC माइनस FE. तो डिस्टेंस मूव BD, डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉय BD विल बी इक्वल टू हाउ मच? FC माइनस FE. FC माइनस FE, FC माइनस FE, FC माइनस FE हमने निकाल दिया. FC इट इज इक्वल टू हाउ मच? 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 अपॉन रूट 3. सो दिस इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉय, डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉय BD. दोनों को माइनस करिए, यू टेक 28.5 कॉमन, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 इसको सब्ट्रैक्ट करिए एंड यू गेट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉय फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन, दैट इज फ्रॉम B टू द पॉइंट D. तो इसमें दो बार ट्राइंगल आपको यूज करना था. सी इट वेरी केयरफुली एंड यूज द सॉल्व द कैलकुलेशन. टेक योर ओन टाइम टू डू दिस कैलकुलेशन. आई एम टेलिंग यू टेक 28.5 कॉमन, तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 इसको एलसीएम लेकर के माइनस करिए. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर we have done the question number 6. ये हमने question number 6 करा था. Now in question number 7, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at a top of 20-meter high building. Suppose there is a 20-meter high building, this is, and at this a transmission tower is put, and at the top of this is 20-meter high, and the building, so from a point on the ground, suppose there is a point on the ground, the angle, it is given that the angle of elevation of the bottom and the top. तो पहले bottom और top का angle of elevation given है, tower का top and bottom. तो it is given that it is 45. तो bottom का 45 degree angle given है, top का 60 degree angle given है. तो AB is the tower, BC is the fixed at the top of the building. तो BC is the building and P is the observation point. तो पहले आप फिगर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो AB is the tower, AB आपका टावर है, and BC is the building, BC is the building and P is the observation point. P आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन द ग्राउंड. तो पहले ये B से आपको 20 मीटर गिवन ही है. इट इज गिवन दैट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 20 मीटर. तो पहले आप लेंगे ट्राइंगल BPC, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस आपको निकालना है इस ट्राइंगल में. तो इट इज 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो 10 45 is 1, BC is 20 and you can easily find PC.
तो पी सी हमारे पास 20 मीटर्स आ गया, पी सी इज 20 मीटर। नॉट टेक द ट्राइंगल ए पी सी। ए पी सी आपको पता लगाना है, तो ट्राइंगल ए पी सी में एंगल कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 इट इज √3। ए सी हमें पता नहीं है, पी सी हमने अभी निकाल लिया 20 मीटर्स, इट इज 20, तो इट इज इक्वल टू 20 √3 इज इक्वल टू ए सी। सो दिस इज द height AC and this is the height, this is PC. Now you have to find the height of the tower. Now the height of the tower will be, height of the tower which is how much, AB, AB आपको पता करना है, which is equal to AC minus BC। अब AC में से BC माइनस करेंगे तो AB आ जाएगा आपके पास। So AC हमारे पास कितना है 20 √3, BC हमारे पास 20 है, इट इज मीटर्स, तो यू कैन टेक 20 कॉमन, तो √3 - 1 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर। तो आपने AB में से, AC में से BC माइनस करा तो AB आ गया। पहले हमने PBC ट्राइंगल में एंगल 45 था, परपेंडिकुलर था, बेस निकाल लिया टेंजेंट लेकर लगा करके, फिर ट्राइंगल APC में एंगल 60 था, परपेंडिकुलर हमें पता नहीं था, PC हमें पता था, तो हमने AC पता लगा लिया। एंड बिकॉज द हाइट ऑफ द टावर इज AB, तो AC में से BC माइनस करेंगे तो AB, दैट इज द हाइट ऑफ द टावर आपके पास, इस तरह से ये आ जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ द चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। Now, in question number 8, what it says that, question number 8, a statue which is 1.5 meter tall stand on the pedestal. तो ये इसका बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन हो गया। Suppose there is a statue which is 1.6 meter tall is standing on the pedestal. कोई pedestal पर ही खड़ा है, तो AB is the statue standing on the pedestal BC. From the point of the ground, the angle of elevation of top of the statue, angle of elevation of top of the statue is how much? It is given as, it is equal to 60 degree. ये हमें 60 degree given है। And from the same point P, the angle of elevation of the top of the pedestal, this is the top of the pedestal, the angle is given as equal to 45. आपको 45 given है, and naturally you have to find the height of this pedestal. So first of all you have to explain this figure. This angle is how much? 60. This angle is 60. I'm drawing it again. So this is the pedestal, AB is the pedestal, AB is the statue, AB आपके पास statue है, BC pedestal है, observation point, ये 60 डिग्री का एंगल, ये 45 डिग्री का एंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन इट। AB is the statue, AB is the statue, BC is pedestal, and this height is given as 1.5 meter, and P is the observation point, P is observation point, P आपका observation point है। तो आपको ये BC पता लगाना है, which is the pedestal. So let the BC will be equal to H, ये हम H मान लेते हैं हाइट। Let the height of the pedestal be H meters. तो पहले कौन सा ट्राइंगल ले लें? ट्राइंगल PBC, एंगल कितना है इसमें 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट एंगल ट्राइंगल ही होता है। tan 45 इज 1, BC हमने H माना है, एंड PC, तो PC इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू H, जो PC है ये हमारे पास H के इक्वल आ गया। नाउ टेक द ट्राइंगल APC, इन ट्राइंगल APC अगेन एंगल इज 60, टेंजेंट यूज करना है, AC अपॉन PC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 is √3, AC ध्यान से देखिए, AC from this to this 1.5 plus H, AC is 1.5 plus H, 1.5 plus H, and PC is equal to H, ये हमने फाइंड करा था। तो √3H is equal to 1.5 plus H, और क्योंकि आपको H फाइंड करना है तो टेक H to the same side, take H common, so it will be equal to √3 - 1 is equal to 1.5, and when you solve it, H will be equal to 1.5 upon √3 - 1 meters is the height of this pedestal. आपको इसको solve करना पड़ेगा, you have to rationalize it, you know how to rationalize it, by multiplying numerator denominator by
changing the sign of the denominator. You know how to rationalize it. You will get the height of this pedestal. इस pedestal की आपको height पता चल जाएगी जो कि हमने h के equal माना था. This is the pedestal. And AB is the statue, which is 1.5 meters. Okay, we'll continue the next lecture. Thank you.